Hello, friends. I thank you for joining us on this endless journey of learning. Today, we are going to talk about critical thinking. What is it, and why is it very important for us, and why we should be developing it in our students also? If I have to define critical thinking, I would define it as the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and or evaluating information gathered from or generated by observation, experience, reflection, reasoning, or communication as a guide to belief and action. अब इसको अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्रिटिकल थिंकिंग एक हमारी सेल्फ गाइडेड और सेल्फ डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है थिंकिंग की, जो हमें सिखाती है हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी से हम कैसे किसी भी चीज़ को सोच पाएं और हम कैसे फेयर माइंडेडली किसी डिसीजन पे पहुंच पाएं, क्रिटिकली हर चीज़ को एनालाइज करते हुए. एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? Because people who think critically consistently attempt to live rationally, reasonably, and also empathetically. They strive to improve the world in whatever ways they can contribute. So, if we are talking about critical thinking, then we as teachers have got the onus of improving upon this very much required skill of our students. And how do we do that in the classroom? There is one very important tool with us, which is questioning. We as teachers use hundreds of questions every day. And why is it important to use them? बहुत सारे पर्पस हैं हमारे. कभी हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने पढ़ाया वो बच्चों की कितनी समझ में आया, एज एन असेसमेंट, एज ए समेटिव असेसमेंट. कभी हम एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट उसको यूज़ करते हैं, ये समझने के लिए कि हम आगे बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए क्या करें, कितना उनको समझ में आया है, क्या उनके समझने में कमी रह गई. सो क्वेश्चनिंग टेक्निक्स हमें अप्लाई करनी होती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, suited to the best technique suited for the occasion. Because all teaching and learning lies in the art of questioning. And questioning is the basis of teaching, task, of encouraging, recalling. It is also essential for deepening the learning process and comprehension in the child. And it also promotes the imagination of the child, problem solving of the child, and it also satisfies his sense of curiosity and improves upon his creativity. So, अगर हम एक अच्छे टीचर की बात करें तो क्या एक अच्छे टीचर का टेस्ट ये है कि वो कितने क्वेश्चंस अपनी क्लास में पुटअप करती है, या कितने उसके बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने आंसर्स दे पाते हैं, हाउ करेक्टली दे पाते हैं, या हम एक अच्छी टीचर उसको कहेंगे जो अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर पाती है बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप करने के लिए. क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, इसका मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो पैसिवली बैठ के एब्सॉर्ब नहीं कर रहे, वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं. सो इफेक्टिव सेल्फ क्वेश्चनिंग कैन इम्प्रूव द स्टूडेंट्स अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ देयर थिंकिंग, which in turn can improve their learning. So it can improve also the long-term retention of the concept, and the skills are also gradually developed, and the ability of the student to apply the knowledge and transfer the knowledge into skill, that also happens alongside. Now, questions जो हैं वो learning के साथ इतने integrally जुड़े हुए हैं कि हमें कोई लर्निंग, हमें ऐसा लगता ही नहीं कि क्वेश्चंस के बिना कोई भी लर्निंग कंप्लीट है, और उस लर्निंग का एंड रिजल्ट नॉलेज गेन में होगा या नहीं होगा, ये हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये हम चेक नहीं कर सकते अगर हम क्वेश्चंस की मदद ना लें. जब एक बच्चा क्वेश्चंस पुटअप करता है तो ये हमें क्लियरली एज अ टीचर समझ आ जाता है कि बच्चा is interested in knowing more than the subject.
The child is wanting to understand it deeply what the teacher is wanting to teach the child. और जब वो इन सबको कर रहा होता है तो उसकी लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एंड कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की कैपेबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं, जैसे मैंने पहले आपको कहा। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनको हम लोअर लेवल क्वेश्चंस कह सकते हैं, जिनमें वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें one just requires to recall that information that has already been registered in the memory. And जो lower level questions होते हैं वो mostly closed ended questions हो सकते हैं, which may have a single answer. But when we talk about higher level questions, they encompass the questions which require one to process the information rather than simply recalling the information, and also to apply the information, to analyze the information, to evaluate the information. That's all about Bloom's taxonomy going higher up in the Bloom. So this happens when we ask open-ended questions to the children. हमें 2 क्वेश्चन रूल लाइफ में भी बहुत बारी लगाना पड़ता है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, उसका जवाब आता है फाइन, बट हम तो डीपली जानना चाहते हैं कि क्या दिक्कत है, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? वी आस्क अनदर क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं नो। फिर हम उससे पूछेंगे नो आई मीन हाउ आर यू फीलिंग, रियली फीलिंग टुडे? And then this second question demands a higher level of cognitive and emotional processing than the first question, and which can be answered very automatically or in a safe way depending on the choice of the person who is answering that question. So the second question requires the person to to think about what they are really feeling and to decide whether they want to really tell you about it or not tell you about it. It gives them the time to reflect upon that. So we often do ask such questions from our students also in order to help them grow their potential. One thing also very, very sure, that questions breed more questions. Regardless of who is asking the question, be it student or be it the student, the birth of one question always lead to the appearance of another. And sometimes these questions might lead us right into what we want to teach, we want to plan to teach, or maybe at other times it may lead our students to acquire some information which they never knew before. So questions that way will help children to learn. Now, when we talk about questions, if you are asking questions which are on the basis on the recall, which are based on recall, maybe who did this, or where did this event happen, or say when did it happen, then it doesn't require anything beyond than simple recollection of the fact. But if we want to probe a little further and we want the child to dig a little deeper into the content, we would ask him what questions. What happens when? This is again based knowledge and the comprehension that he's saying. But if we want to further go up the Bloom, we would ask him questions which require why. Because that is when he's trying to find out why did some phenomena occur. Or maybe the reasons about certain things happening naturally as well. Without asking the why question, science would not have been able to make new discoveries. And it gives us the chance for the child to question himself as well. For example, if we ask the child which is the highest mountain range, or where is it located, what is its height, he just have to go through that information that is already stored, recall it and put it back. But and he knows Himalaya means a place जहाँ already हिम मतलब बर्फ है. But अगर हम उसको यही question इस तरह से put up करते हैं, why is it always covered with snow? And why the other places are not always covered with snow? Then he goes deeper into it. Or if we put him a question, what if it would not have been so? So then he would have to find out, then he'll have to evaluate, he'll have to analyze, then he'll come up with a new answer, which is synthesizing. So at times we as teachers need to ask the probing questions to encourage further thought. These all questions are called as probing questions, wherein the child has to dig deep. Maybe you can assign some work to them collaboratively to be done in the groups, wherein they create an array of questions that give them a series of challenging
answers, or also maybe you can help them with some question stems that could be what if, or suppose we knew, or what would change if, wherein they need to think further. So questions may be used to encourage people think about something more deeply. Questions can be worded in such a way as to get the person to think about a topic. बच्चे के मन में हमेशा प्रश्न होते हैं, और वो उन प्रश्नों को वर्ड्स दे पाए या ना दे पाए, उसकी इजाज़त हम उसे देते हैं या नहीं देते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है इस बात पे कि हम उसको अपॉर्चुनिटीज़ कैसी दे रहे हैं लाइफ में। यहाँ मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ये एक खुले आसमान में पहाड़ों की गोद में सोते हुए बच्चे के दिमाग में उठने वाले कुछ प्रश्न हैं जो वाई एंड व्हाट इफ पे ही बेस्ड हैं। सुनिएगा। ये अंबर है नीला क्यों, नील गगन में तारे क्यों, अरबों मील दूर होने पर भी दिखते हमको छोटे क्यों, चांद पे तो पहुंचा आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या तारों पे पहुंचा है कोई, हिमालय है बर्फ से ढका क्यों, क्या होता अगर ये ना होता ऐसा, क्या फिर भी धरती रहती हरी, क्या कोई दूसरी दुनिया भी है जहाँ पे है कुछ बसते लोग, क्या खाते हैं कैसे रहते हैं, क्या वहाँ भी बच्चे बस्ते लेके स्कूल को जाते हैं। और स्कूल से फिर बच्चे को याद आया कोरोना, और फिर उसने कहा क्या वहाँ भी कोरोना पहुँचा होगा, ओहो क्या होता अगर ये लैपटॉप और मोबाइल ना होता, दोस्तों की शक्ल देखने को भी तरसते लोग। सो हैप्पी टीचिंग and never-ending questions are the only way of creating a learning attitude in our children. Bye-bye. See you next time.